कई बच्चों से एक दो बच्चों को मैं जानता हूँ जिनके पेरेंट्स ने मेरे से पूछा ये इसको तो बच्ची को मैथ्स ठीक नहीं लगती है, बहुत कम मार्क्स आते हैं, और वही जो आप असेसमेंट की बात कर रहे हैं वहाँ पे टीचर कह रही नहीं नहीं ये नहीं कर पाएगी वगैरह वगैरह, लेकिन हम चाहते हैं कि मैथ्स पढ़े। हमने कहा अच्छा वो पढ़ना क्या चाहती है, कहते उसको साइकोलॉजी बहुत अच्छी लगती है और उसको ये कॉमर्स बहुत अच्छा लगता है। हमने कहा फिर उस बच्ची से आप एक बार पूछो कि साइकोलॉजी में क्या मैथ्स नहीं आती है, आगे जाके आएगी, कॉमर्स में बहुत सारी आएगी, तो मैथ से पीछा नहीं छूटेगा, इसलिए उसके साथ सभी दोस्ती कर लो, थोड़ी सी दोस्ती करो। बट सर साइकोलॉजी के लिए 11th 12th की मैथ जरूरी नहीं है। हाँ 11th 12th की बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर एक एक उनका ऑप्शन था कि साइकोलॉजी की उसको अच्छी लगती है, साइकोलॉजी में कहीं ना कहीं पे आप आगे मैथ्स टकराएगी, तो पीछा नहीं छूटेगा बिल्कुल भी। So, I personally feel maybe at this point we need to make parents and students also understand that maybe different kinds of maths will be needed. If you talk about psychology, only central tendencies and standard deviation, only some part of it, statistics will be required because of the research purpose, but not integration and differentiation. हमने साइकोलॉजी के जर्नल्स देखे हैं जिसमें इतनी मैथ्स है कि समझना असंभव है। It depends upon what level you're doing. What he's saying, if you're going to be on a journey as a psychologist, see, eventually ये सब चीजों की मैथमेटिकल मॉडलिंग होगी। जितने आपने जो बताया, आपने तो इंट्यूटिव क्वालिटेटिव बिहेवियर बता दिए, पर जैसे मैंने कहा आपसे, एवरीथिंग एंड नाउ दी होल न्यूरल काइंड ऑफ थिंग एक्सेट्रा, कॉग्निटिव साइंसेस जो है उनका ब्रेन का एक न्यूरल नेटवर्क वो कर रहे हैं। ये तो एकदम एम्पेरिकल फिनोमेनोलॉजिकल था। जैसे जैसे जहाँ भी दो जगह आ रही हैं, एक कि जो ब्रेन के हिस्से हैं वहाँ कहाँ जा रहा है, और दूसरा उसके बिहेवियर्स की जो मॉडलिंग है वो तो मैथमेटिकली होनी है कि कहाँ पे क्या कनेक्शन बन रहे हैं, क्या हो रहा है, पूरी नेटवर्क थ्योरी ये सब चाहिए। अभी हम उनको नहीं जानते हैं, वो अपनी जगह है। Same thing with medicine. See, today you cannot have medicine if you don't have real mathematics in any understanding. So that is more of statistics. No, not only statistics. उसके बाद ये चीजें causality की statistics तो बड़ी first level है। Statistics तो आपको जानने की जरूरत नहीं है, SPSS करके दे देगा। तो वो बात नहीं हो रही। जब आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात करते हैं तब ये आता है। आप उसको मतलब मैंने तो एक्चुअली लाइब्रेरीज में जर्नल देखे साइकोलॉजी के जिसमें समझ में नहीं कितनी मैथमेटिक्स they will use chi-square item analysis. Therefore, there is a whole lot of me beyond this traditional. See, statistics actually is dead. Statistics is now dead because you don't do any sampling. You use big data and do all the data. So मेरे को सैंपल नहीं चाहिए कि हमें ये पता है कि ये जो है ये खुशी राम का डेटा है, ये पूरा इसका पूरा डेटा है वगैरह। So the और दूसरा जो चीज है why maths is important is that when you look at maths and subject, it tells you logical ways of progressing. So inductive reasoning, deductive reasoning, because in some way reasoning is also a very important thing. जो आपने भी पहले बताया, so इसका एक बड़ा famous है Greek expression है ergo hoc propter hoc. So you can find correlations, but correlation is not causation. So the moment you get to dynamics, अभी आपने वो एक ग्राफ ही बनाया एंजाइटी का, दिस इज ऑल मैथमेटिक्स व्हेन यू वांट टू गेट द डिटेल। हम इन लोगों से बात करें लर्निंग कर्व का, सो हमने एक लर्निंग कर्व बना दिया, बट आपके लर्निंग कर्व, इसके लर्निंग कर्व, मेरे लर्निंग कर्व, इसके लर्निंग कर्व के शेप में डिफरेंसेस होगा, सब्जेक्ट्स के लर्निंग कर्व में डिफरेंस होगा। आई विल लर्न मैथमेटिक्स फास्टर देन आई विल लर्न संस्कृत। सो एज यू मूव डीपर, मैथमेटिक्स इज बेसिकली सेम when you want to move into something in a more quantitative manner and understand its dynamics, then you need mathematics. Till you have got to that state, you don't need. So it depends upon your level of ignorance or knowledge. Sanskrit itself is big mathematics. Yes. See, और इसमें एक बात मैं ऐड कर सकता हूँ ना, सर ने जो भी बात बताई थी कि ये एक तरीके से थेरेपी हो सकती है ओवरकमिंग मैथ को भी, उसको अभी नहीं पता है, उसको लगता है कि उस बच्चे को से उसको साइकोलॉजी परस्यू करनी है बिकॉज देयर इज इंटरेस्टेड, या उसको कॉमर्स परस्यू करना है। लेकिन अगर उसको ये बता दिया जाए तो इसलिए मैथ की जरूरत उसको नहीं लगती, उसको बता दी जाए कि अगर आपको सक्सीड करना है इसमें तो दिस कैन बिकम
बार वो इंसेंटिव कभी काम कर रहा है। और सर दूसरी बात ये भी हो जाती है ना कि मैथ्स लेने का मतलब है फुल मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि मैंने ये बड़ा कॉमन चीज देखी है कि अगर बच्चे के 70-80 आ रहे हैं तो कह रहे हैं क्या फायदा लेने का, नहीं अगर तुम 100 नहीं ला सकते। जो प्रॉब्लम हुई क्या है कि द होल सिस्टम is geared to the next level openings for university education. That is not relevant anymore. See, मुझे आप ये बताइए कि ये सब कॉमर्स वाले हैं, कॉमर्स में ऐसा क्या है कि 95% जब तक आपको नहीं आया आप नहीं सीख सकते, डेबिट और लॉसेस, क्रेडिट और तो आपने सीट कम रखी है, इसलिए आपको 95% चाहिए। सो आज की तारीख में आप मुख्य रूप से सीख लीजिए, कर लीजिए आप वो। तो ये जो लोगों का परसेप्शन है, यू नीड दैट मनी हाई मार्क्स इवन टू गो टू इंजीनियरिंग। आपको पता है 800 इंजीनियरिंग कॉलेज तो बंद हो गए, तो इंजीनियरिंग की सीट खाली जा रही है। तो ये नहीं है कि आपको मैथ्स में 95% चाहिए उसके लिए वगैरह। और दूसरा जो फ्यूचर है, इसमें हायर एजुकेशन की स्पेशलाइज्ड डिग्रीज की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अभी जो वैल्यू रहेगी वो ये आप कर क्या सकते हैं। Nobody is going to look at what degrees you have because there will be enough. और दूसरा क्या है, the way technology is moving, people are not going to look at। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम एग्जाम सिस्टम की क्या है, it is a snapshot of you on one day at one time. I'm not interested in a snapshot, I'm interested in the you. कि तुम इम्तिहान की तैयारी करके तो जवाब दे सकते हो, और डे टू डे जब काम के लिए आओगे तो कर सकते हो कि नहीं। सो पीपल आर गोइंग टू गो अवे फ्रॉम एग्जाम्स टू फुल प्रोफाइलिंग। सो हम ये देखेंगे कि ये पढ़ता है, कितना पढ़ने में समझता है, क्या इसकी क्रिएटिविटी क्या है, बिकॉज़ आई वांट द पर्सन। सो एम्प्लॉयर इज नॉट गोइंग टू लुक एट वन एग्जाम टेस्ट ऑन अ गिवन डे बिकॉज़ यू नो दैट परफॉर्मेंस इज नॉट रेप्लिकेटेड। मेरे हिसाब से आइस क्यूब से काम नहीं चलेगा, रिवर फ्लो देखा जाएगा। नहीं ये बड़ा क्लियर हो। This concept I think will take lot of time. No, it is coming faster. See, ये चीजें बड़ी क्योंकि अभी तक भी स्कूल में वो साइकोलॉजी के लिए कुछ बच्चे और कुछ पेरेंट्स इसलिए साइकोलॉजी लेना चाहते हैं कि स्कोरिंग है। हाँ नहीं वो this is where people are wrong. See, मैंने आपसे कई बार कहा कि मेजॉरिटी इज रॉन्ग। ये चीज हमको समझ में आनी चाहिए कि मेजॉरिटी इज रॉन्ग, इट इज ऑलवेज द माइनॉरिटी व्हिच इज राइट। एंड द प्रॉब्लम विद द मेजॉरिटी इज कि दे आर कंप्लीटली हेडेड इन द रॉन्ग डायरेक्शन। तो जो आप बात करें उनकी मेमोरी पुराने जमाने की है, जो वो कर पाए या नहीं कर पाए दोनों की पुराने जमाने की। इट इज आपके सामने देखो 800 इंजीनियरिंग कॉलेज है, और ये 100 साल पुराने कॉलेज नहीं है, ये सब 10-20 साल पहले जो बना। सर मैम हम अभी जब हम अपने ऑफिस में काम करते हैं हम इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं होते हैं कि आईआईटी वाला है कि आईएम वाला है कि दोनों वाला है। हम ये देखते हैं कि वो कौन इस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। एक ग्रेजुएट है जो एनालिस्ट है हमारे यहाँ, और सिंपल कॉमर्स ग्रेजुएट है, हम उसको काम देते हैं कि भाई ये वाला काम ये ज़्यादा अच्छा कर लेगा। और इसके जो है ना प्री रिक्रूटमेंट के टेस्ट ऐसे होते हैं, आपने सुना होगा गूगल जो है वो प्रॉब्लम लिख देते हैं बोर्ड में, ओके आते जाते जिसका मानो सॉल्व करके आए। सो पीपल आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन दिस पीस ऑफ पेपर। मेरी इस पे बहुत बात हुई है। अभी क्या है कि ज्यादातर एम्प्लॉयर्स थोड़े आलसी होते हैं, और उनके एचआर आदमी की प्रॉब्लम है कि वो रिस्क लेना नहीं चाहता है। ये सब जानता है, तो कहता है जब आईआईटी का लड़का मुझे मिल रहा है तो मैं क्यों परेशान हूँ। सो जब तक ये रहेगा कि आपके अनएम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स होंगे, तो मैं ग्रेजुएट से नीचे क्यों जाऊँ, जब वो बिल्कुल फिट नहीं होंगे तब ये होगा। पर ये बड़ी तेजी से हो जाएगा, बहुत तेजी से हो जाएगा, क्योंकि जो लोग देख नहीं रहे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस बिकम सो फास्ट। मैंने एक बार मैं डीपीएस में गया था एबिलिटी सेक्शन में, मैंने कहा तुमने बड़े अच्छा किया, मैथ्स में बड़े अच्छे नंबर आए, बड़ी खुशी की बात है, पर जितना तुम कर सकते हो ये कोई तुमसे करवाएगा नहीं। Who's going to ask you to solve a quadratic equation or find the polynomial or find the third side of a triangle given two sides and things? Nobody is going to ask you to do that. That will be done by machine. There is nothing that a BSc mathematics fellow can do which will be asked to be done by a human being in future. तो उसकी वैल्यू उसमें है कि उसकी इंट्रिंसिक एबिलिटी हो गई। See, IITian जो रिक्रूट होता है वो इसलिए होता है कि IIT में तो उसको सिखाया गया, तो इसलिए जो बाई एंड लार्ज इंटेलिजेंट प्रॉब्लम सॉल्वर हो गया था, और इसलिए वो काम आ जाता है। रघुराम राजन आईआईटी दिल्ली का पढ़ा है ना, वो आईआईटी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के
because like so the ability to learn, solve problem, and मेरे हिसाब से the ability to learn completely new before anybody else. This is the ability which is future ability. This is the most important. Most important is the ability to learn completely new before others. ये रेस है इस समय और सबको अपने से सीखना है. So in fact, even in mathematics, the people who will be successful will be those who can learn mathematics on their own. Because जब हम AI करने जाएंगे तो सभी को टॉपिक आएगी जो हमने BSc में तो नहीं पढ़ाया गया था. तो आपको अपने से सीखना. So the ability to learn on your own is the most important, and even to learn mathematics on it. But you need to have enough background to be able to do that. कि जो हम बताते हैं अगर vocabulary नहीं है, concept नहीं है, fundamental नहीं है, तो आप कहाँ से आगे बढ़ेंगे? और AI में social psychology वालों का भी बहुत participation होने वाला है. Social psychology का कि वो AI को क्या सिखा रहे हैं और क्या नहीं सिखा रहे हैं और क्या उसके consequences होने वाले हैं. तो जो AI डेवलप कर रहे हैं जरूरी है कि वो मैथमेटिक्स में पारंगत हो और दूसरी चीजों में See, mathematics it is one more language. To me, it is basically see अगर आप देखेंगे डिटेल में ना मैथमेटिक्स अप्रोच लेते ही पहला क्वेश्चन आता है मेजर. हम लोग सब भूल जाते हैं. The first thing in mathematics is if you're talking about anything mathematically, you have to talk about a measure. Area is a measure. Volume is a measure. So basically वो अब अगर हम किसी चीज की बात ही नहीं करेंगे तो वो चलती रहेगी. So the application of the other aspects is that you can talk about dynamics. तो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज and that's why calculus वगैरह इम्पोर्टेंट है कि अभी तो रेट जा रहा है. हम अपने टॉक्स में बड़ी आसानी से बताते हैं. मैथमेटिक्स की जरूरत इसलिए है कि everything will begin small. When it is small, the equation is y is equal to x. It is proportional to something. आपने ढूंढना क्या है वो भी ढूंढना होगा, ढूंढना क्या ढूंढना होगा. But इसके मतलब क्या होगा? Will it go as x square? तेजी से बढ़ने लगा. Will it go as e to the power x? और तेजी से बढ़ेगा. Or will it go as sin x? कि ऐसा बड़ा भी नीचे आ गया तो नेगेटिव चला गया. Or will it go as tan x? ऐसे जाएगा infinity और फिर नीचे infinity जाएगा. So therefore, when you start describing phenomena, and you describe with an understanding of what is the mathematics behind it, you will have better control on what to expect. अब बड़ा सिंपल है. आपने एक चीज ऊपर फेंकी, अभी तो ऊपर जाती जाती दिख रही है, बड़े खुशी आपको पता है कि एक हाइट के बाद वो नीचे आएगी उतनी तेजी से. सो इसलिए इंक्लूडिंग अभी आपने जो स्ट्रेस का कहा तो आपने एक जनरल स्केच करा, बट फॉर ईच पीस इट विल डिपेंड. एंड व्हेन यू स्टार्ट डूइंग सीरियस हो सकता है अब इसका स्ट्रेस घटाना शुरू कर दो. So this is where it becomes very important to do everything. So अगर बहुत कम स्ट्रेस है तो आप कहोगे इसको दो कुछ स्ट्रेस. बहुत कंफर्ट जोन में that is who moved my cheese वगैरह की जो बात है, ये इससे नहीं इसको कुछ स्ट्रेस देना पड़ेगा. और स्ट्रेस देके और फिर क्या करते हैं कि उसकी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस रहे और एक कोई सस्टेनेबल हो रहे. बहुत जगह ऐसा एस शेप आ जाएगा फाइनली कि ये सस्टेनेबल उसकी जगह. So anything that you go into deeper, you will end up using more and more mathematics. You can remain without mathematics till you don't want to get into its detail. आप एक broad macro level में ले लेते हो कि सुबह होती है, शाम होती है, ठीक हो गया. बट आपको कि शाम कितने बजे होगी, सूरज कब डूबेगा, अगस्त में कब होगा, सितंबर में कब होगा, then you start needing mathematics. So that is the point for every field. Every field. In fact, yesterday there was somebody he's working with at the Reserve Bank of India. ING Vish. So he's into that. So he was showing me his presentation where in Germany I think they have opened up a branch where there is no human being. It's all automatic. So he was saying that I'm going to propose that still you need a human touch. So even AI, needs the whole system is based on how human mind thinks and human touch is absolutely required, desirable. There is no problem. It will do the human touch part, no? The human, see, the problem with the human touch is you get a human touch, it's a lot of cost on efficiency, productivity, etc. etc. So you will do that when you need it. And मतलब मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि there is a human required. But that human will then use technology for getting things done. So there is, I'm the last one to say human
पहले आपने तो पिक्चर में देखा होगा ना, वो जोतने के लिए आदमी है, या कलकत्ता में वो आदमी रिक्शा चला रहा है, फिर हमने उसको जानवर से रिप्लेस किया, फिर हमने उसको ऑटोमोबाइल से करा, फिर उससे किया। तो हमारे घर में ये सब रूटीन जो something which was below human dignity was done by all these people and technology. And as more and more work below human dignity will be done by machines, humans will do work which is worth human dignity. And one of them is maths, the other is poetry, the third is music. So this is really eye-opener and very, very positive side of this. This example is Very interesting. I like the line that human beings will do what they deserve. हम लोग नहीं, आप देखिए, अभी आप सबसे दीनहीन किसको मानते हैं, जिसको सुबह से शाम मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। Why? Because it is dehumanizing, right? टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आपको लिबरेट करती है, so you have more time left for being human. So far, we were not doing many things which are worthy of human, because we have to spend all our time just somehow surviving. As ये काम होते जाएंगे, so humans का काम मैंने सब तो शुरू किया था imagination से. So literature, poetry, music, dance, and mathematics. नहीं वो है Everything is mathematics. मैं बात कर रहा हूँ abstract. हमारे तो हम तो सोच रहे थे जिसको मैथमेटिक्स नहीं आती और जनरली कहते हैं लिटरेचर में इंटरेस्ट ज्यादा है, शुरुआत में इसी तरीके छंद और कविताओं में भी सारी मैथमेटिक्स आर्ट में मैथ्स है। हमारे जो बच्चे मैथ्स नहीं कर पाते, फाइनेंस के टीचर मना कर देते हैं। The point is very interesting that when as a human being, in fact आपको ये होगा, मैं भूल रहा हूँ उसका क्या है, उसको फाई कहते हैं, golden ratio कहते हैं, golden ratio 1.6 होता है. That this comes everywhere now. As a mathematics, you know that, and you will see people are using it all over. Yes. So बहुत सारी चीजें ऐसी. So it's just a way of understanding, and just the way psychology is a way of understanding how humans behave. But whether I know psychology or not, I will behave in that way. Right? Psychologists try to analyze that behavior and look at generalization. The best example of psychology for sculpture plus mathematics is a sculpture, I think, by Leonardo da Vinci. Yeah. It is called Pieta. Pieta, if you put it on the internet, it will show you Mother Mary is holding body of Christ in her lap. ऐसे बैठी है और उनके ऐसे घूंघट भी लगा हुआ है. Perfect. तो ह्यूमन इमोशंस एकदम चरम पर है, चाहे वो जिस भी कोण से आप देखें, और जो उसका स्कल्पचर पूरी मैथमेटिक्स है वो कुछ. See, the other thing about human thing is that a lot of human thing is cultivated taste. See, जिसको हम natural कहते हैं वो instinctive होता है. जितनी sophisticated चीजें हैं वो सब cultivated taste होती है. आप लोग वो ज्वेलरी में जो देते हैं, ये these are all cultivated taste. It's not intrinsic. You understand all those delicacies. So इसी तरीके से mathematics appreciation is a cultivated taste. मतलब हमको e to the I pi is equal to -1 looks like a thing of tremendous beauty. E is a transcendental number, I is a pure abstraction, pi is a pure abstraction. E to the I pi is equal to -1 is one of the greatest equations. But it requires a certain cultivated taste. तो जैसे चीज है, अभी आप पहली बार चीज खाओ तो आपको बड़ी खराब लगती है, उससे cultivated taste. जो fancy wines हैं, they are all a cultivated taste. Even literature is a cultivated taste. जो fine literature है, that's a very cultivated taste. Then you appreciate that. Music is a cultivated taste. अभी तो वो बापी लहरी की म्यूजिक एक होती है और जो musicians हैं उनकी एक होती है. And why it is important is that humans are supposed to move towards that. ये मजबूरी हमारी नहीं कि हमें खेत में काम करना पड़ा, ये करना पड़ा, क्लास में पढ़ाना पड़ता, ये तो मजबूरी है. वो क्लास में टीचर एआई पढ़ाएगा तो रोबो पढ़ाएगा, तो हम लोग और सोचेंगे विचारेंगे. मेरा एक क्वेश्चन है कि इतना मैथमेटिक्स, इतनी साइंस और ये सब होने के बावजूद भी ये अमेरिका पे जो हरिकेन्स का पंचक लगा हुआ है, ये समझ नहीं आता. नहीं, ये बड़ा सिंपल है. We have just not reached that level. It's very interesting. आपने एकदम सही सवाल पूछा.
क्या है कि जो इस समय अनचैलेंज्ड है, जहाँ both mathematics and computers have to work together, is an area of what is called complex problems. See, in but simple problems are easy to solve. Omega y is equal to mx, simple pendulum, simple harmonic motion, even sin theta, cos theta, tan theta, you can solve all that. The simple problems are all solved. Then you come to the next level of what are called complicated problems. Complicated problems are the sum of simple problems. So अगर तुम एक कार लो, तो कार is a complicated mechanism. बट उसके पार्ट्स तुम निकाल दो तो इंजन अलग हो गया, क्लच अलग हो गया, हर पार्ट को तुमने सॉल्व कर दिया, जोड़ दिया तो तुमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया. कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में तुम हटा नहीं सकते कोई हिस्सा. कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आर अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स टोटली इंटरकनेक्टेड and many of them non-linear. तो जो tan की बात हो रही थी, नहीं tan है ऊपर जा रहा है नीचे से आ रहा है, आप क्या करोगे? So वो तो complex problems can only be simulated. They cannot be broken into simpler problems. So you have to simulate that cycle with our properties, and a very small change somewhere can lead to the monsoon का El Nino effect everything. So we are not able to understand it. Now, in the pre-computer age, you could only write those equations, but could not solve them. When the grey computer came, etc., you could solve them, having taken data from a certain point of view. इसलिए हमारा monsoon forecasting better हो गया. As you do more and more, and big data AI comes, you will be able to predict. So you say, "Hey, tsunami आनी थी यार, आई नहीं, लेट चल रही है tsunami इस साल की," because you would know when to expect it. And this is the progress of mathematics. And this is the frontier. तो मैं जब कहता हूँ कि हमें मैथमेटिक्स एज अ सॉल्व चीज दिखती है, ऐसा नहीं है. There is a lot of things which are still not solved, and people have to solve. And one of them is the solve. तो आप इसको साइक्लोन ले लो, सुनामी ले लो, अर्थक्वेक ले लो, ये सारे फेनोमेनन ऐसे हैं, and some social phenomena. The monetary world, तुमने तो ये सब सुनामी कहा. एक सिंपल और क्वेश्चन है, अगर इस सारे ज्ञान से इतने नोबल लॉरियट इकोनॉमिक्स हैं, इतने कंप्लीट, अगर ये बता दें कि किस दिन का कौन स्टॉक सबसे अच्छा करेगा, I'll be a billionaire in 10 years. With all this, they can't tell. Nobody can tell. मतलब ऐसा नहीं कि वॉरेन बफेट को पता है, आपको नहीं पता है. So these are some intrinsically, और कई बार जो होता है मैथ्स में अभी जो लोगों को ज़्यादा पता है, all problems are not solvable. So there's called NP problems. Some problems cannot be solved mathematically, no matter how much you work on. And this is what the beauty of whether mathematics starts coming. So ये नहीं कि mathematics से सब कुछ हो जाएगा, वो नहीं है. बहुत सारी प्रॉब्लम they cannot be solved mathematically because of fundamental issues. तो वो है. But anyway, phobia बढ़ाना नहीं है. नहीं, it is actually the point is we have got too obsessed with calculation and calculation at the school level or university level. It is just like अब कोई नहीं कहता कि हैंडराइटिंग पे जोर दो, पर हम लोग जब तक हैंडराइटिंग पे बहुत जोर करते हैं, और इनके स्कूल की सब लोगों की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है, चाहे जो हो, क्योंकि बहुत जोर था हैंडराइटिंग. अभी भी हम तो देने की कोशिश करते हैं. जो एग्जाम्पल you gave ना, अभी in the essay one exam I wrote, your concept and your presentation and writing is very good. You have to practice a little more. So अब but to get better. Nobody seriously looks at handwriting as an important issue because जब से टाइपराइटर आया, तब से हैंडराइटिंग की इम्पोर्टेंस घट गई. कंप्यूटर आया और घट गया आज की तारीख में. तो अब वो भी कीबोर्ड पे आप बोल दीजिए और वो हो जा रहा है. आपने पता नहीं देखा कि नहीं, one of the biggest thing about artificial intelligence is now you can speak to your mobile phone and it will convert to text in Hindi also. मैं तो हिंदी में ट्राई कर चुका है. हाँ, it is doing it in Hindi and many other languages. कन्नड़, गुजराती पता नहीं कितनी कर रहा है. तो अगर आर्टिकल लिखना हम बोलते हैं और लिखना है, फिर आर्टिकल नहीं चलेगा, फिर एडिट कर देना, क्योंकि कभी तो कहीं का कुछ लिखेगा, कुछ का कुछ. यानी वो नोट है, अपने सिंपल नोट होता है. Even Google का अपने फोन में है, if you speak something, it will say, it will start searching. Well, it's confusing, but not for नहीं, अभी लेटेस्ट जो iOS 11 है, उसमें मैंने ट्राई किया, हिंदी आराम से होता है और बड़ा मजा है. जैसे बोलते हैं हिंदी इंग्लिश हम मिक्स बड़ी आसानी से कर सकते हैं. हिंदी वाला हिंदी में बोला, फिर उसको इंग्लिश में बदल दिया, फिर इंग्लिश में बोला, फिर जहाँ पे
terms of concepts, in terms of execution, the machine will do. आपको वो टाइम उतना नहीं लगता। एक कॉन्टेंट पर्सन वगैरह का बहुत अच्छा है, कहता है कि हम जब पढ़ाते हैं तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहीं पर भी पाई आएगा तो कहीं 7 या 14 या 21 से, ताकि आसानी से कट जाए। कहते डोंट डू ऑल दिस, गिव देम रियल डेटा and a computer to get real answers and then see what the answers look like. And I think when you're talking about this application of maths in every sphere of life, I think when kids ask this question, that where am I going to use it? So as parents and as teachers, they don't know have so enough much of information, so they are not able to explain where are you going to use it. So they don't interest. This is one of the big problems कि मेरे हिसाब से every subject that is being taught, you first have to sell your subject to the students. मैं एक दिन यहाँ आया था किसी स्कूल मानव रचना में, तो उन्होंने हमको कंप्यूटर डाल दी, समझा हम तो कहते हैं हमारा बड़ा टाइम वेस्ट कर देते हैं पोएट्री सिखाने में इसमें उसमें, अब उन्हें पता नहीं मैं हमको पोएट्री के फायदे और ये बताने। So the issue is that one of the biggest problems is the exam system. See, exam system का problem क्या है कि you have to grade masses and therefore you have to have a systematic thing for grading, जिसमें चाहे हिंदी में 100 हो जाए. So that is one of the problems. दूसरी जो बात आपने कही, I'm a great believer of that, especially early classes. No child can give a wrong answer. It is his wrong construct. So you have to ask him ये तुमने क्यों कहा? See, because उसका construct ये है ना, तो कैसे मैं deliberately क्यों झूठ बोलेगा आपसे? So he is trying to tell what he thinks. राइट, तो जो मैं बोलता हूँ न्यूमरेटर जोड़ दिया उसने, या 16 बटा, सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल 16 बटा 64, उसने 6 काट दिया, 1 बटा 4 आ गया राइट आंसर। उसके पास एक सेव था, ये सेव तो हमेशा ही एक देने के साथ होगा। So the whole idea that we try to do this is the other main reason why maths has a problem is that I don't want to offend people. I have had many senior owners of schools who said हमारे टीचर तो आती हैं, उनके खुद के स्कूल के परफॉर्मेंस बड़े लो होते थे, राइट? तो किसी ने कहा मैं तो बड़ा अच्छा स्कूल है, तो 50% से ज्यादा वाली कोई नहीं है टीचर हमारे, राइट? तो अब अगर मतलब स्कूल में ही 50, 60, 70 कुछ भी रहो, मेरे मतलब 90 से कम कुछ भी रहो, तो उनको मैथ्स का डर रहेगा। 90 से ऊपर वाली है उस जमाने की तो कभी स्कूल टीचर नहीं होगी। नहीं, पर हम ये कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि बहुत a person who had very good grades in college can be a good math teacher. You have to get down to the level of the student to be a good math teacher. But before that, is very important. You must be happy with that subject. No? Yeah, you have to have if you haven't done well, yeah. If you haven't done well, it is unlikely that you really love the subject. अब एक तरफा प्यार होता है, but normally, if you are good at it, then only you show that enthusiasm and infection. If you have also some struggle with the subject, you don't show that. And this is one of the basic problems. The other is that because education is driven by authority, हमें कोई justify नहीं करना होता कि हम ये क्यों करें. Had it been driven by something else, then you would say, भाई ये हम क्यों पढ़ा रहे हैं? वैसे क्या फायदा होगा? And then you have sold it to the other people. Okay, और ये basic scheme, क्योंकि the whole problem is driven by authority. So it's easier to say ना CBSE का curriculum है. नहीं CBSE का curriculum क्यों है? मैं तो उस पे जा रहा हूँ. अब CBSE नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो इसलिए है कि डुबाने की किताबें बहुत बच्चों पे लगे हैं. नहीं तो आप क्यों, मुझे आप आज बता दीजिए, मैं अभी तक जवाब चाहता हूँ कि भाई सबको मैथ सिखाना क्यों जरूरी है. और मैं कह रहा हूँ मैं मैथ्स का डरना, मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूँ और मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट भी था, नंबर भी अच्छे मिलते थे, अभी भी इंटरेस्ट है, पर मैं ये नहीं समझ कि सबको मैथ्स सिखाने की क्या जरूरत है. अब आप कहोगे इससे थिंकिंग एबिलिटी बनती है तो क्रिटिकल थिंकिंग सिखा दो, डिडक्टिव रीजनिंग बनती है तो शेरलॉक होम्स की प्रॉब्लम करा दो. दिक्कत ये हो रही है कि हम ये, और फिर उसको सिखाने के बाद आप उसको आगे पढ़ने नहीं देते. तो मैं या तो आप फिर आप कहते हो कि सीट कभी पढ़ने नहीं, तो फिर क्यों फंसा रखा है. तो मुझे इसलिए बुरा लगता है कि इतने सारे बच्चे जो परफेक्टली रीजनेबल और अच्छे हैं, उनको
ये fear हो feeling हो जाती है कि हम तो मैथ्स में नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, बेमतलब का अपने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लाना। और एक ये आइडिया कि अभी सीख लो नहीं तो उम्र में नहीं तो इज ऑल्सो रॉन्ग। यू कैन लर्न समथिंग इवन एट अ लेटर स्टेज। मैंने अभी आपको फॉरवर्ड किया है, वो स्किनर जो इतना मशहूर है वो खड़े में बोलता हूँ तो उसके बाद ही वॉज अ फेलियर एज ए नॉवेलिस्ट, फिर वो साइकोलॉजी में आया, पर उसने सीखा सब कुछ। और दूसरे का नाम स्टीवंस था जो उसको मिला, स्किनर को मिला। तो ये कोई ये जो एक नोशन है कि अगर छठी में तुमने पाइथागोरस थ्योरम नहीं सीखा तो कभी नहीं सीख पाओगे, इज अ मिस्टेकन नोशन। देयर इज नो डेटा टू प्रूव इट कि यू कैन नॉट डू दैट एट अ लेटर एज और व्हाटएवर। सो जब जरूरत पड़ेगी तो सीखेंगे। वो जो जरूरत ड्रिवन लर्निंग होती है वो कहीं बेटर होती है, because then you have a reason to sort of learn and so on and so forth. Anyway, I think let us wrap up. These slides you will share it now. Yeah. वो तो आप So I think we have तुम्हारे पास ऑलरेडी है ना कुछ, है ना? स्लाइड नहीं है। मैं मेल कर दूंगी। हाँ, मेल क्या करना, तुम व्हाट्सएप ग्रुप की मेंबर हो, तुम अपलोड कर दो। ओके। नहीं दिक्कत होगी तो मेल कर दो। I think I have WhatsApp on my laptop. वहाँ से जल्दी हो जाए। Whatever suits you करके भेज देना। So more or less we have discussed all the points in some or the other way. So these are all the things that creatively Sir has already been pointed it. So I think what you do is you now wrap up by simply saying that if somebody wants to come for cognitive behavioral therapy for overcoming his or her mass phobia, and he comes to you, he or she, what is the next scenario? जैसे आप ना हॉस्पिटल में जाओगे, पहले यहाँ होगे, वहाँ होगे, फिर ओटी जाओगे, फिर ये जाओगे, तो कोई कहता है मेरे को समझ में आ गया, I want CBT and I know what my problems are, you are the expert, so how many sessions will it take, will each session will be of so long, and can it be done by remote, कि वो अगर विजयवाड़ा में है तो भी कर सकता है। So that is what I really want, because I want next step, people should actually be able to get help. So for any child who is having math phobia, we should look at the ABC only. A is your affect, the child's affect, what kind of feelings are associated with that, behavior, what the child is doing, practically speaking, like I said, many children just read maths, and not only just reading or something related to maths, sometimes doing something else. Like many kids have found that they were very fond of playing football, but football chhura diya, so you know that kind of revenge is somewhere else. So sometimes just participating in any kind of physical activity is also good. So and cognition, that is the thought system and the belief system which is associated with that particular activity, which is maths in this case. So any case, any child which comes up with this, we just need to do ABC analysis. Yeah, and this is done through a series of sessions that you can. Yeah, by through talking, by asking direct, indirect questions. So typically, some idea of how long does it take for some confidence to happen? See, because we must also give a clear picture that it needs a commitment of a few months before you will see. Yes, that is the basic assumption of CBT, that we call it as homework. Yeah. So we give that kind of homework in CBT. And another very effective technique which I have found with kids is, technically speaking, we call it as systematic desensitization or some kind of creative visualization. So you know, many times it's very difficult to convince the child कि आप सोचो, you know, just saying the child कि आप positive सोचो, he will not think positively. So sometimes you need to demonstrate that. So creative visualization is very good. So in that we make the child totally relaxed by giving you know, all the progressive relaxation suggestions, that your feet are relaxing, your legs are relaxing, and all that. So once the whole body is relaxed, then we say that now imagine that you are doing your maths exam. So it can be in a hierarchy level also. Like you can make a hierarchy from the lowest anxiety producing situation to the highest anxiety producing situation. The lowest can be that I just went to school. Now I have the next higher can be I have a maths period. The third can be I got the assignment, and the fourth, fifth, sixth can be that now today I have an exam and I'm sitting for the exam. So the child visualizes that situation where he's giving the exam,
tries to feel relaxed. Now, in the typical creative visualization, we say that imagine yourself that you are giving the exam and you have got your results in your hand. Now you are very happy, and everyone around you is happy, and you're very excited to do maths. So this is creative visualization. So we are trying to associate giving examination with a positive feeling, and it is believed, assumed that all these connections will be carried forward to, will be generalized to daily life situation, practical life. In systematic desensitization, we tell the child, okay, now imagine your lowest anxiety producing situation. And the child is comfortable, yes, I went to school, he's imagining. And a kind of contrast can be made that as soon as you feel anxious, you just raise your hand. So, first situation, no anxiety. Third situation, no anxiety. Fifth situation, or the eighth situation where I'm sitting for the exam, now I'm feeling anxious, the child can raise the hand and again tell the child just to relax the body. Now, the whole principle behind this is that they say that positive and negative emotions cannot stay together. So either if anxiety is very high, then relaxation cannot happen. But if relaxation is high, anxiety will automatically come down slowly and gradually. And we also try to make some associations here. So what happens as soon as the child is able to master 7 situations while visualizing that I'm okay, I'm not feeling anxious, but I'm feeling anxious now at the 8th situation. Now again the body is relaxed. They say that it is assumed that the child, if he is feeling more relaxed, so slowly and gradually he will start feeling relaxed even while visualizing the highest anxiety producing situation. And they believe that this kind of vision and the image in the mind the child will carry. And it will be implemented, it will be applicable in their daily life situation also. So while doing maths, he will not feel that anxious as he used to feel earlier. Because that connection we have already made in the imagination. So sometimes this is also very helpful, but as school counselors, sometimes we're not able to do it regularly, but then we take it as a homework. So we say that we practice it at home and we always take a feedback. So even if it is related to practice, related to daily targets, or doing these creative visualizations, we always tell the child that get back to us and share whether you have done the homework or not. CBT can never be done only in a half an hour session and we say that the counselor has done some magic on and it is over. It can never be. Whatever small tasks So the typically counselor minimum time commitment that the parent should expect in 3 months, 1 month, 6 months. It all depends. Yeah, that's all right. But what do you call reasonable expectation? 15 to 20 sessions. 15 to 20 sessions of 2 hours each, 1 hour each. 1 hour each or maybe 45 minutes also. Okay. 40-45 minutes is good enough. And at what frequency? Generally, I prefer that at least twice a week. Okay. But in a school situation, it is not possible, so once a week. We reduce it to once a week. So we say every Friday you show me. This is all right. So this is now gives some idea of what it is. That it is not magic, keep us eye or phobia. And there is no point in meeting every day. Because the child needs to practice certain skills and then give a feedback. What would be the right, if I can say, age? अभी तो अगर हम किसी दिन शुरू कर रहे हैं स्कूल में भी 10th वाला आया उसको 8th में भी जरूर एंग्जाइटी रहेगी तो वो 10th में ही क्यों आया या ये चीज चौथी से 3rd से 4th से 5th से स्टार्ट हो जाए या जब तक कि कोई अपनी बीमारी आके बताए ना तब तक हम नहीं करेंगे. Sir, it all depends that how aware the teacher is, because it's very important for the teacher to identify that child. Or for the parents. Or for the parents to identify. So that identification is very important because otherwise, who is going to help? Again, unless and until I say कि मेरे सर में दर्द हो रही है तो आप मेरे को सर दर्द की गोली नहीं देंगे. Unnecessarily तो आप नहीं करेंगे कि नहीं तुम शक्ल से तुम्हारा लग रहा है तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है तुम खाओ. You can't force counseling or any kind of strategy onto anybody unless and until either the child comes, the parent reports. Yeah, as awareness spreads, it will come. कि पहले कोई डेंटिस्ट के पास नहीं जाता था, वो नहीं था. ठीक है. And I think at the lowest level, the focus should be more on the strategies to build on the mathematical concepts rather than dealing with examination phobia. Because young kids, they learn fast by making associations. So if you are building on their basic concepts and as well as
you are giving them a good experience. Yeah, that's why all we, in fact, I sent you that thing. Skinner ने ये कहा, one of the things is start learning some maths. So हम ये बात करें कि help you learn maths, will help you overcome everything, will help you with your vocabulary. So ये multi-pronged attack है, जैसे surgical strike. सर्जिकल नहीं है, ये multi-drug therapy है. Surgical strike हुआ तो ये नहीं, it's more like multi-drug therapy that we are looking at 3 dimensions, because if we just say emotion आप सिखाया नहीं मैथ तो कोई फायदा नहीं. दूसरा ये, why I personally believe that the performance in exam is not important, but socially it is important. So therefore, let them improve their performance in maths exam also. कि मैं इतनी बातें करता हूँ, इससे कहता हूँ कि मेरे नंबर आए, तो मेरे नंबर नहीं आए होते तो मुझे कहने में भी गिल्ट होती कि भाई ये है कि नहीं. So I think what we are saying, और मैथ्स में ये एक बड़ा फेमस एक्सप्रेशन होता है, necessary but not sufficient. So it is necessary to get those marks, but it is not sufficient to get those marks. So I think all these slides I will use because this is for general CBT also. Like in the beginning, I have just give you an idea so that when you see the slides, you should know. These are the unhelpful thinking habits which are there. That how we have different kinds of unhelpful habits. And after this, there are slides on this alternative, more balanced thought. So whatever unhelpful habits I have talked about there, so alternative, if there is a mental filter, then you know what positive we can do. So all of us can apply to onto ourselves also. So this you can read in the slides. Stephen Covey की है ना 7 habits of successful people, ऐसा ही एक presentation है 7 habits of unsuccessful people. वो कहता है they will always bring mothers, they will bring this. So I think rest we have already done. Sometimes I like sharing this with students that always use the stop technique. Stop and don't act immediately. Which तो stop में 2 पी तुमने जानबूझ के लगाया? हाँ जी. So वो last में 2 पी होगी. अच्छा ये वाला. So because you know we are very good in reaching the conclusion. एक एग्जाम में मार्क्स कम आ गए और हम कहते हैं कि I can never do it. So stop. Take a break. Take a pause. एक बार GDP में खट के आप लोग खेल रहे हो. So observe your feelings, thoughts, and emotions. Put in some perspective. What is the bigger picture, like the applied side, what sir was talking about, and then start practicing whatever works for you. So sometimes it works. It all depends on the child. This we have already discussed in some or the other form. Very good. Thank you. Thank you so much. I'm sorry if it was